झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। So in Jharkhand, Sarhul, it's called as Sarhul. Bade Josho Kharosh means it will be celebrated with lots of joy and happiness. के साथ मनाया जाता है. It will be celebrated. Okay. 4 दिनों तक. 4 दिन is 4 days. 4 is 4. दिनों is days. तक इसका जश्न चलता रहता है. Till 4 days, the celebration will be carried out or will be celebrated for 4 days. अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती हैं. अलग अलग means different types of caste or the religion. इसे अलग अलग समय different times में मनाती हैं and celebrates. संथाल लोग फरवरी मार्च में तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं. So this is a different caste. Okay. संताल लोग means that the kind of caste, the tribe. संताल they celebrate in the month of February to March. तो ओरांव लोग, ओरांव is another caste. इसे मार्च अप्रैल they celebrate in the month of March to April. आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं. आदिवासी is another tribe. Okay. आमतौर generally, आमतौर is generally, पर प्रकृति की पूजा करते हैं. They actually do पूजा of the nature. प्रकृति is nature. सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है. So during सरहुल के दिन विशेष रूप में like a different way or they have a different type of विशेष रूप से साल के पेड़ is a tree. पेड़ is a tree. Okay, साल is a name of the tree की पूजा की जाती है. So during the time of Sarhul, this tree, okay, this tree called Sal is they do puja for this tree in a different way. यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं. यही समय है means this is the time जब साल के पेड़ों में, साल is a tree, फूल is a flower, आने लगते हैं. This is the time when the tree actually starts flowering. और मौसम बहुत ही खुशनुमा होता है. मौसम is the weather. बहुत ही means very, खुशनुमा is like very nice and peaceful. स्त्री पुरुष दोनों ही डोल मंजीरे. स्त्री पुरुष is both, all the ladies and the men, दोनों, both the ladies and men. He dole manjor, they actually they celebrate by see, can you see here? The dhol is this and manjol is this. Okay, it's a kind of musical instrument. लेकर रात भर नाचते गाते हैं. So they take this and the whole night they'll be singing and dancing with this. चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आस पास बसे छोटे छोटे गांव. So all these things celebrates it. That is चारों ओर means all the four side, फैली हुई which is vastly spread. छोटी छोटी घाटियां means small valleys. लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल. लंबे लंबे means tall trees, sal trees. Okay. Forest of long tall sal trees. और वहीं and there आस पास बसे छोटे छोटे गांव. आस पास means like nearby villages. छोटे छोटे गांव is villages. लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमरे में बाहें डालकर नृत्य करते हैं. लिपे पुते means ribbons. Okay, करीने से बुहारे which is woven together और सजाए गए
which is woven together and it is decorated. अपने घरों के सामने, in front of, अपने घरों means in their house. सामने is in front of their house. लोग is people. एक पंक्ति में, एक पंक्ति means in one line. कमरे में, sorry, कमर में बाहें डालकर. So they stand in one line and they put their arms, okay, they put their hands around their waist and and they dance. Nritya karte hain means they dance. So it's a kind of dance, okay, where they actually decorate their houses with ribbons and which is woven together, and they all stand in one line and they put their arms around each other's waist, okay, around their kamar is waist, and they dance. अगले दिन, the next day, वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं. So the next day, नृत्य करते हुए means they keep dancing and they go घर घर. घर घर जाते हैं means they go visit each and every house. और फूलों के पौधे लगाते हैं. They plant. फूलों के पौधे means the plants which flowers, okay, the flowering plants, they plant it over there. So they go dancing to all the houses and they plant small plants which gives flowers, okay. घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है. घर घर से means in all the houses, from every house, chanda मांगने की भी, they have the pratha is tradition. They have the tradition of collecting chanda or something instead of what they do, okay, like donation. पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं. but चंदे में in the donation, for donation, मालूम है क्या मांगते हैं. Do you know what they ask in their donation? मुर्गा, चावल और मिश्री. मुर्गा is cock, okay, the male hen. चावल is rice और मिश्री is sugar. फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर. फिर चलता है, then continues, खाने पीने, drinking and eating, और खेलों का दौर and games का दौर. That is the next round, okay. तीसरे दिन, the third day, जाकर पूजा होती है. So the third day is the puja or the worship happens. जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं. जिसके बाद is after that, लोग, people, अपने कानों में, in their ears, सरई का फूल, they wear सरई का flower, they put in their ears. इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है. इसी दिन, this day, वसंत ऋतु is spring season की शुरुआत, the starting, मानी जाती है. They believe that this is the day where the spring season starts. धान की भी पूजा होती है. The paddy fields, okay, पूजा होती है. It will be also be worshipped. पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है. So all the paddy which is which they have worshipped and which they have done the puja, that will be planted or that will be sown on the next बोया जाता है. बोया means sown. They sow the paddy, right, in the field. So it will be done on the next season. तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है. So in Tamil Nadu, मकर संक्रांति और या फसलों का से जुड़ा, the festival which is related to the crops, और मकर संक्रांति is called as पोंगल, मनाया जाता है, celebrated in the name of पोंगल. इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है. So the crops, the kharif crops, okay, all the crops which is grown in the kharif season, this चावल, अरहर आदि, that is rice and अरहर आदि etc. कटकर, they'll be cut and घरों में पहुंचते हैं, will be sent into the
houses. लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं. लोग, that is people, नए धान is new crops or the new paddies. कूट कर, that means they break it, okay, and that is a way of actually getting the rice from the paddy. चावल निकालते हैं, they remove the rice. हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है. हर घर में, like in every house, मिट्टी, that is made up of mud, का नया मटका, new pot, लाया जाता है, will be brought, जिसमें नए चावल, in which, जिसमें is in which, नए चावल, new rice, दूध is milk और गुड़ is jaggery, डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं. So what they do is they put the rice, milk and jaggery in a pot. Like every house they will buy a new pot, earthen pot, and they put rice, milk and the new rice, whatever they have harvested now, that rice, milk and jaggery they put, और पकाने, and they पकाना is to cook के लिए, धूप is sun, रख देते हैं, they keep it in the sun, okay, to cook it. हल्दी शुभ मानी जाती है. Haldi is turmeric. Shubh means is auspicious or it is good. मानी जाती है, they believe, okay, that haldi is very good. इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देती है. साबुत means in little or the new. Haldi is turmeric. को मटके के मुंह, that is the mouth of the pot, के चारों ओर, like all around, बांध देती है, they tie it all around. यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है. So this pot, यह मटका is this pot, दिन is in the day, during the daytime, 10:30, that is 10:30 to 12, 12 is 12, बजे तक. So from 10:30 to 12, they keep it in the sun, धूप में रखा जाता है, that keep it in the sun. जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं. So जैसे ही, like as soon as, दूध में उफान आता है, when उफान is boil, okay, when the milk starts boiling, और and दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है. दूध चावल means both the rice and the milk, मटके से, from the pot, बाहर गिरने लगता है. When it comes, बाहर means out, गिरने लगता है, when it starts to fall also. So when the milk and the rice, they start boiling, and when it falls out from the pot, so they shout, okay, everyone shouts, Pongala Pongal, Pongala Pongal. That means khichdi mein ufan aa gaya. In the khichdi, that is in the rice, it has started boiling. के स्वर सुनाई देते हैं. स्वर is they sound, okay, that is they all start saying together this slogan, like Pongala Pongal, that is the milk has started boiling, the khichdi has started cooking. So this is what happens in Tamil Nadu, and earlier we saw it in Jharkhand, right? So can you see the state is marked over here on the India map? Okay. So this was in Tamil Nadu. Now we are going to Gujarat. Okay. दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाएगा. So दूसरी ओर, the other state, like in the west, okay, गुजरात में, in the Gujarat, पतंगों is kites. पतंगों के बिना is without kites, तो मकर संक्रांति का जश्न, the celebration of मकर संक्रांति, अधूरा ही माना जाएगा. अधूरा means something like it's different, like you cannot celebrate Makar Sankranti without using
without flying kites. इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार के रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी. इस दिन, that day, आसमान की ओर towards the sky, यदि if नजर उठाएं, if you look at the sky, okay, तो शायद हर आकार और रंग, तो शायद means like every shape, आकार is shape and रंग is color. रंग रूप में पतंगें आकाश में लहराती हुई मिलेंगी. So when if you get a chance to look into the sky during this day, you will get to find all kinds of shapes and color of kites in the sky. प्रत्येक गुजराती चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, प्रत्येक गुजराती चाहे, like every Gujarati, whether it is like किसी भी धर्म, whether it is of any caste and or religion, they have a different caste and religion, right, in Gujarati, and या आयु and age also, पतंग उड़ाता है. So let it be like whether they are of different caste or religion and of different age also, they fly kites. हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है. So like hazaron, thousands and lakhs of kites. Because of that, even the sun, Surya is sun, also bhi also ढक सा जाता है. So they're saying that because of the hundred and thousands and lakhs of kites, even the sun will be covered. I mean, there won't be any sunshine. कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतियां भी कहते हैं. So in Kumaon, that's in north, okay, that's a place in north. मकर संक्रांति को घुघुतियां भी कहते हैं. It's also called as घुघुतियां. इस दिन, that day, आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं. So that day, आटा is the flour और गुड़ is jaggery को गूंद कर, so they mix that and पकवान बनाए जाते हैं. They make a dough out of it, okay, by mixing the flour and the jaggery, and they make a dough and they make a dish out of it. पकवान is dish. इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं. So in पकवानों, all these dishes को तरह तरह के the different types of आकार, shapes दिए जाते हैं, will be given. जैसे ढमरू is the ढोलक, the drum, okay, the small drum. तलवार is sword. और दाडिम का फूल आदि. So दाडिम का फूल is a type of fool. So all these shapes will be made from the dough. पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है. पकवान is so these thing, okay, when it is made, they will be after they are fried के बाद एक माला is they'll be woven into a पिरोया जाता है. They will be woven into a माला or a chain form. माला के बीच में संतरा और गन्ने की घंडेरी पिरोई जाती है. So माला के बीच में, in between the माला, संतरा is orange और गन्ना is sugarcane की घंडेरी, the thread, पिरोई जाती है, will be that also will be woven together. So can you see here? So in this food they'll be made into different shapes and they will be in between that they will put the orange and the sugarcane strings also. यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं. यह काम, this work, बच्चे, kids, बहुत रुचि, they'll be very much interested to do all this, okay. सुबह बच्चों को माला दी जाती है. सुबह, in the morning, बच्चों को, for the kids, माला दी जाती है. The kids will be given this माला. बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं. So because of
cold, okay, because it's winter and it's very cold. Karan is the reason, okay. Pakshi, the birds, पहाड़ों से, from the mountains, चले जाते हैं, they move away from the mountains because it is very cold. उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं. So to call them back, okay, so to call all the birds which has gone away, to call them back, बच्चे इस माला से, from this mala or the chain, pakwan, the dish, whatever they have made, okay, that तोड़ तोड़ कर, they break the food, okay, what they have woven into a string, right? That dish they पक्षियों को खिलाते हैं, they feed the birds with this. I mean, they take pieces from this food and they feed the birds और गाते हैं, and they sing this song. कौवा आओ, कौवा is crow, आओ is come, घुघुत आओ, come fast, ले कौवा बढ़ो, take this crow, माँ कह दे जा सोने का चढ़ो, come and give us a golden pot, खा लाई पूरी, eat this पूरी, माँ कह दे जाओ सोने की छुरी, and give us a golden knife. इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं. Along with this, okay, इसके साथ ही, along with this, जिस चीज की कामना हो, कामना is wish, वह मांगते हैं, they ask for. Along with this, like whenever they are feeding the birds and everything, whatever they wish for, they ask or they pray for it. है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के, है ना, isn't it, कितने अलग अलग, the different way of अंदाज is the different style, मकर संक्रांति को मनाने का, isn't it, the different styles of celebrating मकर संक्रांति. कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, so somewhere they make a kheer, okay, or the sweet made up of milk, rice and jaggery. तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं. So somewhere, some states this make the sweet out of these milk, rice and jaggery, and in other places they take 5 प्रकार के नए अनाज. So 5 प्रकार is 5 types of नए अनाज, means new grains की खिचड़ी. They make a खिचड़ी out of this, a porridge out of this. कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है. कहीं कहीं, so few places, लोगों का सैलाब, so the group of people, okay, yeah, the crowd, नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ती है. So they go, नदी is river, स्नान is bath. So what happens is, in few places they go to the river, and this group of people, they go to the river to take bath. लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, पर बर्फीला पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लाएंगे. लोग is people, ठंड से, because of the cold, ठिठुरते, they'll be shivering. पर बर्फीले पानी, so this ice cold water, में कम से कम, at least, एक डुबकी, they dip themselves, okay, they dip themselves at least once in this chill water, okay, the frozen water. They'll be actually shivering because of the cold, but at least they will know, in this frozen water they take at least one time they dip themselves. हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती. It will be so crowded, okay, it will be so crowded कि in these places, इन जगहों पर तिल, you know what is til? It's a sesame seed. रखने की भी जगह नहीं होती. There will be no place to keep one sesame seed also. It will be that crowded. तिल का याद आया, तिल से याद आया. This reminds me of Kumbh Mela. You must have seen in Kumbh Mela in the news and everything. People will be so, they'll be so crowded. There won't be space for even, like they have given example that there won't be space to keep even one
til or sesame seed. Til se yaad aaya. When you say til, it reminds me of मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल का पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है. So when you said til, it reminded me of मकर संक्रांति के दिन. Okay, during Makar Sankranti, पानी में तिल डालकर स्नान करना. So you have pani is water, til dalkar, putting the sesame seeds in water and taking bath with that water. Til daan karna, to donate sesame seeds. Aag mein til dalna, to put til in the fire. Aag is fire. Til ka pakwan banana, to make dishes made up of til. विशेष महत्व रखता है. It's of great importance. Okay, महत्व means importance. तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? So the writer is asking you, तुम्हारे घर या इलाके, in your house or in your area or the society, इस त्योहार को, this festival को कैसा मनाया जाता है? How is it celebrated? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है? So इसे, to this, is it called खिचड़ी, पोंगल और मकर संक्रांति और something else, कुछ और कहा जाता है? He's asking, is it called something else? या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो? या तुम फसलों से जुड़े, something related to crops, कोई और त्योहार, any other festival मनाती हो? Do you celebrate? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं. So when you talk among yourself, right? When you talk, if you are sitting together and when you talk among yourself, when you discuss this, so फसलों से जुड़े यदि तुम आपस में बात करते हो, when you talk among yourself, तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी. So you'll be surprised to know that कई बार एक ही इलाके में रहने वाले, so many a times एक ही इलाके means like in one society, रहने वाले लोग, so people who are staying in one society, इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं. So they celebrate this festival in different styles. So you'll be surprised to know that people who are living in one society itself, so in one society there will be different kinds, different religion and different people from different states, and they will celebrate in a different style. So this is the end of the story, children. We have learned how Makar Sankranti is being celebrated in different states of India. Like earlier we learned the different names of the festival, and in detail we learned it's celebrated in Jharkhand and how it's celebrated in Tamil Nadu, Gujarat, and also in there was one more place in Delhi, right? It's called Kumaon. So yeah, all these places it is celebrated in different ways. Some people they fly kites, and some they plant. They dance and they celebrate in different places, and they make sweets and pongal and khichdi it's called as. So we learned in detail how it is celebrated. So it's important for you to learn the names of this festival in different states and the way it is celebrated. So all these will be asked in your questions. Okay, so I hope you all understood, and if you have any doubts regarding this chapter, it's a little tough to remember these names, but if you have any doubts or any queries, don't forget to leave your comments in the comment box. Till my next video, please take care. Thank you. I hope you liked the video, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel and hit the bell icon to get notification for all the videos I upload. Take care.